Good evening friends, welcome to Unacademy, which is the largest online education platform for GATE Computer Science and IT. Here myself Malisham Devasane, I am going to take the class today in this session static scoping and dynamic scoping. So in C programming we follow static scoping because C programming is static scope language, and this dynamic scope languages, the C programming doesn't follow dynamic scope, but in runtime environment of the programming languages, these two are very important, static scope and dynamic scope. So theoretically we are going to learn, and here this topic is not purely belongs to C programming, whereas this dynamic scoping is not completely related to the C programming. Okay, let's start with my introduction. If anybody is new to this session, I have secured only rank 119 and 210 in my BTech with self preparation. So after cracking this GATE exam, then I have joined IIT Bombay for MTech. Then after completion, I am completely in GATE field. So far I have experience in many subjects, but here I am going to take TOC, compiler and programming. And in case if you are joining Unacademy, use DEVALIVE referral code. I'll be talking about the benefits, why do you require to join. If you are seriously preparing for GATE exam and you require definitely guidance, then we are there and I am there to guide you to crack the GATE exam. These are my subjects. I am going to conduct regular special classes as well as plus courses on Unacademy, CTOC and CD. Also I am taking in free classes. And if you do not know, I am going to take 3 kinds of classes on YouTube as well as special and plus. Special and plus I conduct on Unacademy, and this YouTube classes are on this channel. And special are free completely, plus courses are paid. And more than 300 hours of content is already available free on Unacademy. You just visit my profile to learn the concepts from me. Yeah, Bhaskar, hello. And why you may require to convert to plus? The reason is if you are interested for more practice and learn every topic and revision on every topic, and you want every GATE solution, you want to clear your doubts for every topic from every subject, then plus is more beneficial. Then what plus has? The live classes, whether it is a regular course or practice course or GATE previous year questions, we have regular classes, live classes there too, and weekly tests. These are the important factors in plus. And iconic, all the benefits of the plus. Additionally you will have a coach to guide you, and also you will have booster sessions to improve your performance, and you will have a separate study material. So these are the benefits of iconic. If you want to know the price of plans, that is plus, we have 1 year, 1.5 year and 2 year plans, and price is 27,225 for 1 year. After applying DEVALIVE, you will see including 10% discount. Right. For 1.5 year, 34,650. For 2 years, 39,600. Iconic is more popular than plus, which is going to be having the price 45,225 for 1 year, 66,600 for 2 years. And once you are paid, and we are always there to guide you and help you how to crack the GATE exam, but you are having more beneficial courses inside the plus. And this is our GATE aspirants Facebook group. You can join to get the regular updates from us. This is Unacademy GATE CS Telegram channel. You can subscribe to get daily links and daily material from us. We have various YouTube channels from Unacademy. You can share with your friends, even though is not from CSE, and you can share all these channels. And on this channel we have all the subjects to learn. So be connected and try to attend every class where we are going to conduct every day and every weekend, which are very important sessions for you. And guys, if you are watching this video, please like this session
and also share if you have any friends they wanted to come to our class, and subscribe to channel to get daily notifications. Right. Yeah, let's begin today's session. Guys, I can see that. Keep liking our sessions. Please, I'm waiting for your likes, which are very important. Your likes are very important for us to reach more audience. So in previous classes, we have seen storage classes and recursion in C. And that is almost we have completed C programming for GATE. And even that in compiler, we have runtime environment. So there is a common topic to the programming languages and runtime environment of compiler, that is parameter passing. So by looking at call by value and call by reference, we are going to practice today what is static scope and dynamic scope. Yeah, good evening, Chakraborty. And we'll also see a lot of examples to understand these two scopes, right? So whether it is C language or not, we are going to practice this static scoping and dynamic scoping today. So let's begin with what is static scope. What is static scope? And we know C language is statically scoped, no doubt. So whether it is C or not, we don't care now. We are worried about if any programming language is statically scoped, then how that program is going to use the parameter passing techniques at runtime. So let's begin. This static scope basically depends on syntax, that is the structure of the program. So static scope also called as lexically scoped programming language. Lexical scope also called as static scope. So this is known during compilation time. So before runtime only the whole static scope is decided. Static scope, in the sense scope is known. Scope of every variable is known before execution. That means during compilation. Scope in the sense the visibility of any variable. Every variable is known before execution. So you should depend on your syntax to understand what are the variables are visible for each function. So for each procedure and for each function, the visibility of the scope of variables is known during compilation only. That is the meaning. So we are going to understand what are the variables are visible at each function. So at runtime this is not going to change. That is why we call static. The scope of every variable is fixed. Yeah. And this kind of questions are there. Before 2005 there are a lot of questions. As per only C programming we have now, so static scope is more important than dynamic scope. So let's look at one example to understand what is static scope. What is static scope? Now here, look at guys, we don't execute, but variables visibility is known before execution. We have only one program, guys. We have only one program. Everybody can see that. This is our program. And here we have how many procedures? This is procedure W and this is D. You have to understand begin end structure. I'm not talking about C programming. This is your program main function. Just like a main function, guys. So when you are executing program P,
that execution begins from here. But लेकिन अभी execution की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ we can talk about what are the variables are visible at W, and W we can talk about separately, D we can talk about separately, and program P, that is this begin end, this is your program, we can talk about them separately. Scope of variables at each function we can talk about. Scope of variables we are going to talk about. What are the variables that are visible to only W? Guys, you look at in this W, X is visible. In this W, X is visible because X is local to W. X is visible. X of W visible. And N of program, N of that's global is visible. Global section. And that's all visible to W. And when D, it is, there are two N's, guys. There is one N here and there is global N. Which N is visible? Only N of D is visible. It's local. N of D only visible. N of this function only visible. And when it comes to a procedure P, that's a program P. Program P, यहाँ पे तो local variable नहीं है, सिर्फ N of global. यहाँ पर N of global section is visible. And this visibility doesn't change during runtime. That is the reason we call static scope. Everybody? Yeah, look at that, how beauty that by looking at the program you can understand what are the variables I can see. These variables, that binding is known before execution only. So you can say that access link is made. Access link is made even though it is not visible, not present inside the main, inside the function. So if you want any global section variable, the access link is there to access. If it is local, stack is there to access. Yeah, this is the visibility of the variables. Then if I ask what is the output of this program using static scope, then you have to execute properly. So let's start executing. First execution begins from your begin. This is your main program. So N is the 10. So guys, the global section में N है. That is going to be updating. That's a program P. You can assume that's a main. N is equal 10 is executed. Now we are calling the D function. D processor is just like a D function. Now we are not passing any parameter. So D is going to be called. So I'm calling D here. What is D? D has local N. And you have N is equal to 3 assigned. Now you are calling W of N. Guys, now parameter passing is coming, then assumption starts. Is it call by value or call by reference? Call by value will work different way, call by reference will work different way. So right now I am assuming call by value so that I can produce some output. Call by reference may have a different output. Remember that. I am assuming call by value. So 3 will be passed instead of address of N. So W of 3. So I am going to call a function W of 3. Here N is local, that is X, guys. X is local, that is a 3. And X is equal to X plus 1. This 3 become 4. And print X. So output will be 4 first time. So I am writing somewhere output 4 first time. Then after printing this one, then you will turn back to your function. And there is nothing to execute there. You will turn back here. So what is the output? Output is the 4. Yeah. Keep engaging, guys. Output is a 4. Output is the 4. Only one time it is printed. 4. Everyone? Yeah, output is 4. Alright. Let's move on to the dynamic scope. Then we are going to practice a lot. So static scope, the visibility depends on the structure. Right? At runtime, the visibility is not decided. Okay?
Before runtime only this is decided. Okay, let's start with dynamic scope. Static scope depends on the structure, but dynamic scope, it depends on the visibility of every variable, depends on runtime. Scope of every variable decided at runtime. Then at runtime, how it is going to be decided? Because the function calling sequence is going to help us to understand function calling sequence. You may require call tree to understand function calling sequence will help to understand the dynamic scope. Will help to understand dynamic scope. So what is that exactly means? We will see. Now, is that clear, everybody? What is the static scope? The structure decide the scope of that variable, scope of each variable. Now let's look at another example. Now here, dynamic scope, it doesn't depend on the structure. It depends on which order you are going to execute. Example, guys, look at. First you are calling, let's say, program P. That's, let's say, main. I'm assuming this is the main. This is the main. Assume that way, like a C programming. This is the main program. And main calls D, yes or no? The first one is calls D. Main calls D. Assume that D is a function or procedure. And D, you go to D, it's a begin, it calls W. The next W is the next call. Right? This is the function calling sequence. Now look at, before the main, the variable n exists. So inside the main, the local and then global will be taken. But here n only visible. For main, only n visible. Only n is visible. For D, x the local hai and D can see the main variable. So main already is accessing the global, that is n. X of D, you can write clearly like this. Instead of this way, I am writing clearly. N of global. And here for x of D. And it will look inside. Main. If any local variable of main is there, it can see that D can see that main variables. But main ke andar kuch nahi tha, n of global. So that will be seen. And W, we will look at inside first. Where is that? Sorry, I am not looking at D, guys. I am looking at W. In D, we have N of D. N of D, then N of global. So दोनों तो same है. So nearest one will be taken. Nearest N. That nearest N is D only. Sorry for that. W, this time W only X is there. So X of W, no doubt. And it will see first D. D में कुछ है? Yes. N of D. Ab W will not see N of global because nearest it will see. Look at that, guys. The structure is not going to affect here. Only the function calling sequence. Yes. All right. Everybody, main can see the global section and its local, and D can see first preference is local, and if any variable is not there, it will look at in main, and if main is not exist, then it will look at global. So it's flows like that. Main will see global, D will see main, W will see D. Here structure doesn't matter. Only function calling sequence is going to affect. Everybody, now look at this variable scope purely depends on execution. Scope of every variable inside the function. Inside every function depends on
runtime only. And guys, this is the most important point, that is static scope, dynamic scope. Most important point is if you look at the main difference, variable scopes or scope of every variable, of particular function will be known before execution only. मतलब how many variables are visible? That are fixed. Example, look at the previous one. Look at that. X of w, n of global is fixed for every function called w. W 100 times कॉल किया, उसके अंदर a ही होगा हमेशा. X of w, n of global. ये कभी चेंज नहीं होगा. But when it comes to dynamic scope, the scope of variables keep on changing. Variables of a particular function, it doesn't depend on structure, will be known before execution because depends on syntax. Scope of variables of particular function or procedure will be known during runtime only. You will never know what variables are visible for a particular function. ऐसा होता है ना guys? मेन से EF कॉल किया, सपोज EF से G कॉल किया एंड मेन के बाद G कॉल किया, तो दोनों अलग है गाइस. दिस कैन सी, G कैन सी F, it can see G, but this G can see only main now. Every time G is different guys. G is a function, its variable scope is decided based on the function calling sequence. Is it clear? G can see F, G can see main, but this G can see only main, and F variables are not visible in G in dynamic scope. In dynamic scope, the variables visibility depends on the function calling sequence. Everybody, किसी को डाउट्स आया थोड़ा रोक लीजिए यार. यू हैव अ टाइम टू प्रैक्टिस. इतना एक बार थियरी में सब कुछ नहीं आएगा ना. एंड गाइस, इफ एनीबॉडी वाचिंग द वीडियो, प्लीज कीप लाइकिंग. वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस वन बाय वन. आपको क्लैरिटी बनेगा थोड़ा. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन. आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक्स. आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग, बट लाइक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यार. बनता है. We are teaching more than 1 hour, 1.5 hours. If you are really enjoying our sessions, just one like is going to affect much. Yeah, please like this session guys. Let's begin. How to understand this scoping. Now, we have one program. Guys, we have one program. But we are running static scoping and dynamic scoping. Two different programming environments. दोनों सेम नहीं होगा. पहले फिक्स कर लो आपको क्या करना. Do you want to work on static scoping or do you want to work on dynamic scoping? पहले डिसाइड करो आप, तभी आंसर स्टार्ट होगा. राइट, आई एम डिसाइडिंग फर्स्ट स्टैटिक स्कोपिंग. फर्स्ट स्टैटिक स्कोप, ये रिजल्ट आने के बाद ही जाऊंगा डायनेमिक स्कोप में. दोनों एक बार नहीं होता किसी प्रोग्रामिंग में गाइस. Programming language, either it will be static scope or dynamic scope. Everyone? Yeah. मुखर्जी, repeating तो example से समझ में आएगा ना. Theory is not going to be understood perfectly 100% because of you lack the interpretation. समझ लो अभी example से. What do you mean by dynamic scope? यहाँ से भी theory आएगा back. चलो, static scope. वीडियो घुमा के रिवाइंड करो यार, हो जाएगा आपको अगर चाहिए तो. स्टैटिक स्कोप एंड डायनेमिक स्कोप. स्टैटिक स्कोप पहले करेंगे हम, बाद में डायनेमिक स्कोप. स्टैटिक स्कोप डिपेंड्स ऑन दी सिंटैक्स, राइट.
तो पहले सिंटैक्स बना लो, सिंटैक्स बना लो गाइस. This is your main total program. This is your total program. Dynamic scope will not depend on the structure, remember. So we have a main function, we have f function, and we have g, and we have a global also. This is our structure. This is our structure. Now पहले डिसाइड कर सकते हैं आप what are the variables are visible. देखो मेन के अंदर visibility scope guys, scope. What are the variables are visible? सिर्फ I of global, ये भी लिखना पड़ेगा आपको global, क्यों I of f भी है, वो यहां दिखता नहीं है. एंड f के लिए I लोकल है, ग्लोबल है, सिर्फ स्कोप यहां पर I of f ओनली, दिस फंक्शन ओनली. g के लिए सिर्फ स्कोप, ये पहले डिसाइड होगा, ये I of global. इज द क्लियर? whenever you access the I in g, that is a global. तो मतलब indirectly it is pointing to the global variable I, right? तो are you ready to execute? Start execution from the main. वही से execution होता guys, everybody knows that. Start executing main. and main के अंदर I is equal to 10 है, but आपको पता है I is a global variable है, उसके अंदर 10 जाएगा, ये ग्लोबल डेटा है, राइट? डेटा रीजन में होगा. एंड मेन कॉल्स f, yes or no? एंड व्हेन इट कॉल्स f, ये I लोकल में क्रिएट होगा, लोकल में उसका वैल्यू 20 है. एंड ये g कॉल करेगा और g प्रिंट I, या प्रिंट किसकी होगा? ग्लोबल की होगा, f की होगा, सिर्फ ग्लोबल की. क्यों? दैट स्कोप इज ऑलरेडी डिसाइडेड. तो इट विल प्रिंट 10, दिस विल प्रिंट 10, आउटपुट इज 10. एवरीबॉडी इज क्लियर? आउटपुट इज 10. क्यों? इसको सिर्फ ग्लोबल दिखता, जी को f नहीं दिखता, जी को मेन नहीं दिखता. इज इट क्लियर? सो इन द स्टैटिक स्कोप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, structure will decide what variables are visible. Variables visibility पहले बना के हम जाएंगे. Everybody, is that clear? Output is 10. X is the output printed using static scope. तो x का वैल्यू 10 बन गया, x का वैल्यू 10 and y का वैल्यू बनाएंगे हम अभी. Clear? Can I delete the scopes and program structure? अभी स्ट्रक्चर की बात जरूरत नहीं गाइस, क्यों? स्टैटिक स्कोपिंग हो गया ना. डायनेमिक स्कोपिंग के लिए स्ट्रक्चर जरूरत नहीं. क्यों? देखो स्टार्ट करेंगे मेन से. आई तो सबको दिखता, ऐसा नहीं है. एंड देखो आई तो ग्लोबल में है 10. एंड व्हेन यू आर कॉलिंग द मेन तो वही एक्सेस करेगा ना. आई इज इक्वल 10 मतलब वो ग्लोबल में अपडेट होगा. कॉल f वी कॉल, एंड लोकल आई है तो वहां पे अपडेट करेंगे 20, ये भी एग्जीक्यूट हो गया गाइस. एंड कॉल g, अब g इज कॉल्ड बाय f, मतलब g प्रिंट i. यहां पर g कैन सी i ऑफ f. मुखर्जी देखो g के लिए अभी ग्लोबल नहीं दिखता. क्यों? g पहले i को इसमें देखता, अगर इसमें नहीं तो इसमें देखता, अगर इसमें नहीं तो इसमें देखता. इज इट क्लियर? तो g पहले f में देखेंगे, अगर f में नहीं है तो कहां देखना पड़ेगा आपको? g f में, i f में नहीं होगा तो मेन में देखेगा, अगर मेन में नहीं है तो तब भी इसमें जाएगा. क्लियर दिस पॉइंट? ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं होता. हु इज कॉलिंग दिस g, उसमें देखेगा, अगर उसमें नहीं है मेन में, उसमें नहीं है ग्लोबल में. दिस इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर कॉलिंग सीक्वेंस. तो यहां प्रिंट आई करना मुझे, तो व्हाट इज द वैल्यू आई प्रिंट? 20 प्रिंट होगा. आउटपुट क्या आएगा यहां पर? 20. सो इफ आई यूज डायनेमिक स्कोप, आउटपुट इज 20. क्यों? जी को f दिखता, क्यों? f इज कॉल्ड g, दैट इज कॉल्ड एज कॉलिंग सीक्वेंस. यस, तो एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं गाइस.
I'm saying again, at runtime, suppose main calls F, F calls G, G calls H. Suppose main has another call like GF. Assume that way. Main calls H. तो guys इसमें visibility क्या है? H कितने बार आया? दो बार से visibility नहीं होगा. H यहाँ पर H की दिखेगा, इसका दिखेगा और G का भी दिखेगा, F का भी दिखेगा और मेन का भी दिखेगा. बट लेकिन इस H का सिर्फ मेन की दिखता, नहीं तो लोकल H की दिखता. दोनों H अलग विजिबिलिटी है गाइस. या स्कोप ऑफ दिस H मतलब स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन दिस H, स्कोप इनसाइड H इज डिफरेंट. स्कोप ऑफ वेरिएबल्स in this H, scope of variables in this H are different in dynamic scoping. In dynamic scoping, the scope of the functions variables will keep on changing, but static scoping H कहीं से भी कभी भी कॉल करो उसका विजिबिलिटी कभी चेंज नहीं होगा. ये प्रोग्राम अपडेट किया तो करके देखो यार. F के बाद G होगा कॉल तो G अलग होगा ना, वो भी कर लेते ना. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इनको F के बाद G करना तो समझ लो गाइस, इनकी बात समझ लो. ये F के बाद G कॉल किया तो F जाके आप स्टैटिक के डायनेमिक पहले तो फिक्स कर लो है ना. तो G कॉल किया, अगर स्टैटिक स्कोप हो तो 10-10 प्रिंट होगा, चेंज नहीं होगा. 10-10 प्रिंट होगा दो बार. अगर डायनेमिक स्कोप किया, अब ये F G में जाएगा है ना, तो G 20 प्रिंट करेगा, ये G 10 प्रिंट करेगा. 20-10 आएगा, 20-10 आएगा गाइस, 20-10 आएगा. इज दैट क्लियर? अगर यहां भी फंक्शन है एक और है ना, F से G जाएंगे. एक बार यहां पर इसको हटा लेते, प्रोग्राम अपडेट कर लेते गाइस. इनको कॉल G दूसरी फंक्शन है यहां पर, फंक्शन कॉल. तो ये F कॉल करेंगे G और G, ये I क्या प्रिंट होगा? 20 प्रिंट होगा. डायनेमिक स्कोपिंग, डायनेमिक. ये G क्या प्रिंट होगा? ये भी कॉल करेगा बट लेकिन इस टाइम 10 प्रिंट होगा. 10 प्रिंट्स. क्यों? I वैल्यू दिखता है ना, 10 प्रिंट्स. दोनों G अलग से कॉल बन रहा है ना. ये कॉल 20 प्रिंट करेगा, ये कॉल 10 प्रिंट करेगा. एवरीबॉडी, दोनों की कॉलिंग सीक्वेंस अलग है. दोनों की कॉलिंग सीक्वेंस अलग. एक बार बना लेता हूं. इसका कॉलिंग सीक्वेंस क्यों अलग है? क्यों अलग है गाइस? क्यों अलग है? एक कॉलिंग सीक्वेंस है मेन है, मेन के बाद F है, F के बाद G है. दूसरी कॉलिंग सीक्वेंस डायरेक्टली मेन से G कॉल हो रहा है. ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा. ऐसा नो, ये F की बात अलग है, G की अलग बात अलग है. राइट? दिस G प्रिंट्स 10, दिस G प्रिंट्स 20. पहले 20 प्रिंट होगा, बाद में 10 प्रिंट होगा. चलो राइट, एक ही प्रोग्राम है ऐसा, और बहुत है प्रोग्राम्स, अभी क्यों टेंशन ले रहा है. ठीक है. 10 and 20. X value is 20. That is the value printed by static scoping. All right. अब कुछ अलग है guys, कुछ अलग है. When somebody doesn't mention about scoping, by default आपको starting में जाना है. याद रख लेना guys. When somebody doesn't mention about the scoping, because in our syllabus we have only static scoping now. The syllabus has been changed many times from the past 30 years. Now this time static scoping is the 99% questions. अगर dynamic scoping आया तो याद रख लेना calling sequence. All right. चलो, most of the time because यहाँ पे तो static scoping, dynamic scoping mention नहीं किया ना, तो static scoping लेना है आपको. क्यों? our syllabus is purely depends on static scoping. तो structure बनाना पड़ेगा आपको. structure, पहले structure decide करना पड़ेगा. This is your program. Your program body is below. This is the main is below. This is your main. This is your main.
and this is your W call. Everybody, but W has 3 parameters that uses call by value. तो देख लेते अभी, देख लेते ग्लोबल वेरिएबल्स तो कुछ नहीं है ना, तो डिक्लेरेशन का यहां मतलब नहीं है, क्यों? दे आर नॉट वरीड अबाउट डिक्लेरेशन, जो अंदर यूज कर रहे हैं वही डिक्लेरेशन है गाइस। तो मेन, मान लो मेन के अंदर ए है, वहीं पे लोकल मान लो कि ग्लोबल पे कुछ डिक्लेयर नहीं किया, एंड दिस इज गोइंग टू कॉल पी, ए प्लस बी 6 एंड ए 3, ये 3, दिस इज द कॉल बाय वैल्यू, तो वैल्यूज पास होगा गाइस, एड्रेस पास नहीं होगा। तो पी, इसके बाद आपको याद रखना है प्रिंट ए तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना, प्रिंट ए करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू के अंदर कितना वेरिएबल्स है? एक्स एक है, वाई एक है और जेड भी एक है, लेकिन आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना गाइस। ये 6 है, एक्स में जाएगा, ये 3 है, वाई में जाएगा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, दिस 3 विल गो टू जेड, मतलब यहां 6 आएगा, 3 आएगा, 3। वी हैव 3 वैल्यूज आर पास्ड फ्रॉम मेन टू डब्ल्यू, एंड देन आपको y इज इक्वल y प्लस 1, मतलब 3 4 बनेगा, एंड z इज इक्वल x प्लस x, 6 प्लस 6 12, एंड जब रिटर्न होगा प्रिंट ए मतलब लोकल की है, तो ये 3 प्रिंट करेगा, दिस विल नॉट अफेक्ट, आउटपुट इज 3 ओनली, इज इट क्लियर? एग्जैक्टली भास्कर, 3 इज द आउटपुट, clear? Everyone, come on, reply the answer, which is very important. If you are watching the video, please like this session, I'm requesting everyone, please like this session. Yeah, चल आगे चलते, इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। अब सेम प्रोग्राम है बट लेकिन कॉल बाय रेफरेंस, एंड गाइस याद रख लेना, वी आर फॉलोइंग बाय डिफॉल्ट स्टैटिक स्कोपिंग। व्हेन दे डजंट मेंशन एनीथिंग अबाउट स्कोप, वी ऑलवेज फॉलो स्टैटिक स्कोपिंग बिकॉज आवर सिलेबस इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन स्टैटिक स्कोपिंग। या चलो लेट्स स्टार्ट। अब वेरिएबल्स को है ना डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो वैसे भी डिक्लेरेशन तो नहीं है, तो स्टार्ट कर लेते सीधा। मेन है ना, अब बना लो, स्टार्ट कर लो। मेन के अंदर ये मेन है गाइस, 3 वेरिएबल्स है, डिक्लेरेशन वैसे बाहर नहीं है तो अंदर ही लिखना पड़ेगा आपको। तो अब P ऑफ A प्लस बी, मतलब A प्लस बी मतलब 6 है गाइस, ये किसी के एड्रेस नहीं बनेगा, ये एड्रेस ऑफ ए मतलब एड्रेस ऑफ ए। नाउ कॉल बाय रेफरेंस करना है ना, तो 6 एड्रेस पास करेंगे। मैं बताता हूं, थोड़ा रुक लेना गाइस, ये 6 की जगह कुछ और भी बना लेते हैं हम, ये एड्रेस ऑफ ए प्लस बी बना लेते हैं, ठीक है? थोड़ा रुक लीजिए गाइस। रिटर्न आने के बाद प्रिंट ए करेंगे। अब चलते, ये कैसे कॉल करता, पी के अंदर, सॉरी डब्ल्यू है ना यार, ये थोड़ा चेंजेस हुआ गाइस, ये पी फंक्शन है, थोड़ा गलती लिया, अब पुराना भी नहीं देख रहा था मैं, ये पी है ना, प्लीज मेक इट हैपन, दैट फंक्शन नेम शुड मैच। मैं थोड़ा गलती, टाइपिंग में गलत हुआ था, ठीक है राइट। पी ऑफ 3 वेरिएबल्स है ना, 3 वेरिएबल्स, तो एक्स की होगा, वाई की भी होगा और जेड की, लेकिन इसका क्या है मीनिंग गाइस, ये एड्रेस पास किया कॉल बाय रेफरेंस, तो ये एड्रेस ऑफ ए प्लस बी मतलब ये कहीं पर 6 बनेगा, ऐसे होता है ना, 6 वैल्यू बनेगा, इसकी एड्रेस ये लिंक होगा, मतलब अगर 1000 मान लो, ये 1000, क्यों ऐसे, क्यों इट कांट, वी विल नॉट पास द वैल्यू, वी विल पास द एड्रेस ओनली। ए प्लस बी मतलब एड्रेस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी तो लोकल वो वेरिएबल नहीं है ना, एक्सप्रेशन है, तो 6 के एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस ऑफ ये तो फिक्स है, तो मान लेना इसके कुछ और, ये 100 मान लो, ये 200 मान लो, तो यहाँ 100 जाएगा, यहाँ 200 जाएगा, एड्रेस ऑफ ये दोनों सेम है ना, तो 100 ही जाएगा दोनों में। एवरीबॉडी
दोनों में 100 ही जाएगा. So now the y also points to A, z also points to A. This is called as call by reference. हम तो ये पास कर रहे हैं लेकिन वैल्यू नहीं होगा. ये सी प्रोग्राम नहीं है गाइस. सिंटैक्स फॉलो करेंगे हम, सी प्रोग्रामिंग को फॉलो नहीं कर रहा है. दुनिया में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसी सिंटैक्स को इसी मीनिंग आएगा. ऑलराइट, but लेकिन the actual syntax may differ from programming to program. Okay, let's move on. Start executing guys. So this was okay and we are pausing it. Now we call to this and y is equal y plus 1. मतलब अब indirectly c में star y is equal star y plus 1. मतलब यहाँ 3 4 बनता guys. यहाँ जो 3 है ये जो star y is equal star y plus 1 4 बनता. और z मतलब स्टार z इज इक्वल स्टार मतलब x स्टार x प्लस स्टार x. मतलब यहां पर 6 प्लस 6 होगा. 6 प्लस 6 12 z में स्टोर होगा. मतलब स्टार z ये 4 12 बनेगा. एंड इसके बाद फिर वापस आया तो प्रिंट ये कर रहा है, यहां 12 प्रिंट होगा. यस करेक्ट भास्कर, यू आर राइट. 12 इज द आउटपुट. बट यू शुड नो हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. Chalo guys, please keep liking the session. Everybody 12. Keep on moving. Call by value एक बाय एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है guys. Programs are not to see this, right? Good Chakraborty. Now let's another one. What will be the output if the parameter passing is called by reference? And remember, follow static scoping. Now this is your program guys. X तो local है यहाँ पर and y भी local है. तो now we start executing guys. Your main program is P1 now. P1 इसके अंदर x है, इसके अंदर y है. तो y is the 10. ये कौन है यार? द फंक्शन कॉलिंग इनको बताना पड़ेगा भास्कर. फंक्शन कॉलिंग इज 2 टाइप्स, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू में स्टैटिक स्कोपिंग डायनेमिक स्कोपिंग होगा. कॉल बाय रेफरेंस में भी डायनेमिक स्कोपिंग स्टैटिक स्कोपिंग होगा. ये ऐसे नहीं बोलना कॉल बाय रेफरेंस जरूरत नहीं है, कॉल बाय वैल्यू जरूरत नहीं. ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं होता. सिंपली फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप जाके एग्जीक्यूट करें. ये प्रोग्राम को मत करना क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन नहीं दिख रहा है आपको. ऑलराइट, तो क्वेश्चन को फॉलो करें यार. आप खुद ही डिसाइड करके आप इन्वेंट किया क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. ऑलराइट, नाउ वी आर कॉलिंग फंक्शन 1. कॉल बाय रेफरेंस करना है ना. कॉल बाय रेफरेंस मतलब यहां पर एड्रेस ऑफ y, एड्रेस ऑफ x, ये एक्चुअली लिखना पड़ेगा. सी लैंग्वेज अगर देख लिया तो एवरीवन. उसके बाद रिटर्न आने के बाद प्रिंट x करना और रिटर्न आने के बाद प्रिंट x के बाद प्रिंट y भी कर लो. तो वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस, वी आर मूविंग टू दिस वन. वी आर मूविंग गाइस. फंक्शन 1 इसमें तो पहली पैरामीटर देखो x है, सेकंड पैरामीटर देखो y है, ये इसकी लोकल है गाइस, z है. और देख लेना फर्स्ट पैरामीटर विल गो इनटू दिस, मतलब इनडायरेक्टली इट पॉइंट्स टू दिस वन. एंड सेकंड पैरामीटर गोज टू y, दैट इज राइट एड्रेस ऑफ x. कंफ्यूजन तो होगा क्यों, यहां पे xy है वहां पे xy है, तो देखना पड़ेगा आपको सही से. थर्ड पैरामीटर इज z विल होल्ड एड्रेस ऑफ x, इनडायरेक्टली इट विल पॉइंट टू x. क्लियर दिस पॉइंट. ये एग्जिट कर लिया. तो अब y इज इक्वल y प्लस 4. गाइस जो प्रोग्राम दिया है वो नहीं आता, आप थियोरेटिकली वो चेंज करें ये चेंज करें, क्या होता है क्या नहीं होता, दुनिया में ये आंसर क्लैरिटी नहीं बनेगा. प्लीज राइट द प्रोग्राम एंड डिस्कस विद मी. कम टू द अनअकैडमी एंड डिस्कस विद मी एंड यू हैव अ ग्रुप्स एंड यू कैन पोस्ट योर डाउट्स. बट ऐसे नहीं होता. रिमेंबर दैट. आस्क इन द कमेंट सेक्शन राइटिंग होल प्रोग्राम. थियोरेटिकली यू कांट स्पीक योर प्रोग्राम. I can't handle your doubt. All right.
एंड नाउ आई एम एक्सिक्यूटिंग y इज इक्वल y प्लस 4, मतलब स्टार y इज इक्वल स्टार y प्लस 4, ये y है गाइस, y इज इक्वल y प्लस 4, इनडायरेक्टली ऐसे बोलना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग में स्टार y प्लस 4 इनडायरेक्टली गाइस, मतलब एड्रेस ऑफ x में जाएंगे 10 प्लस 4 14 बनाएंगे हम, एंड z इज इक्वल x प्लस y प्लस z बोल रहा है, तो इसको ऐसे मानना है सी लैंग्वेज में स्टार z इज इक्वल स्टार x प्लस स्टार y प्लस स्टार z मान लो, दैट इज एक्चुअल सिंटैक्स इन सी, पर इन जनरल वो सिंटैक्स को फॉलो करना जरूरत है हमको। स्टार x मतलब 14 देख लेना 3 है 14 है गाइस, ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन होता है हमेशा। स्टार x मतलब इसको देख लो स्टार y मतलब 3 है, प्लस स्टार y को देखो स्टार y मतलब 14, इसी प्रोग्राम में देखो स्टार z मतलब ये एड्रेस ऑफ x को रिफर कर रहा है 14 28 प्लस 3 31, स्टार z में स्टोर करेंगे दैट 14 बिकम 31 एंड ये एग्जिट करने के बाद हम फिर वापस जाएंगे यहां पर प्रिंट x करो 31 आएगा आउटपुट, y करो वो 3 आएगा 31,3 इज आउटपुट, 31,3 y अपडेट नहीं हुआ, कम ऑन एवरीबॉडी 31,3 कम ऑन, थोड़ा कंफ्यूजन होता क्यों, XYZ आप कहां देखने वाला है, when I am executing the statement in func1 then you should look at XYZ in that, then only you will go to P1 somehow. Everyone, this is the confusion the people will have. (31,3) क्या लिखना है यार, ओके क्लियर। इससे पहले एक प्रोग्राम छोटी प्रोग्राम लेते, ये कोई लिखा, इनको दुनिया में इतने सारे डाउट्स यही पर है, ये रिटर्न कर रहा है, ये हैंडल ही नहीं कर रहा है, क्या बोलूं इसको, प्रिंट तो करो कुछ। रिटर्न a प्लस बी कर रहे हैं गाइस, ये डायनेमिक स्कोपिंग हो, स्टैटिक स्कोपिंग होगा तो a प्लस बी नहीं दिखता, a प्लस बी नहीं दिखता, ग्लोबल में होना चाहिए, तो पहले डिक्लेयर करो इंट कहां पर है, इंट ये भी वहां पर है, तो डायनेमिक स्कोपिंग में चलेगा, दिस प्रोग्राम इज वैलिड, बट स्टैटिक स्कोपिंग में इस प्रोग्राम इनवैलिड, अगर a कामा b मेन में है स्टैटिक स्कोपिंग इज इनवैलिड, नहीं कर सकता, क्यों ये कामा बी इज अननोन टू द ऐड, वो ग्लोबल में नहीं है ना, स्टैटिक स्कोपिंग इज नॉट पॉसिबल हियर, क्यों, दैट a प्लस b, दैट a एंड b इज नॉट विजिबल हियर, a एंड b इज नॉट विजिबल हियर, आप a एंड b यू आर यूजिंग, देन स्टैटिक स्कोपिंग में ये नहीं कर सकता, डायनेमिक स्कोपिंग में कर सकता, क्यों कर सकता, क्यों मेन विल कॉल ऐड, तो मेन के अंदर a है और b है, तो 4 5 when you call it then this will do 4 plus 5 that is 9 will return to the x, तो x will have the 9, only dynamic scoping में कर सकते हम, तो आप पूछ रहा है लिख रहा है दोनों अलग तो है ना, अगर है ना, ऑलराइट, पूछने से कोई दुनिया में समझ नहीं आता यार, प्रोग्राम लिखना पड़ता, ऑलराइट, anyhow then let's start the call by value, now this time call by value, ये तो बहुत इजी होना चाहिए गाइस, p1 x 10 है, y 3 है एंड func1 कॉल बाय वैल्यू है ना, तो वैल्यू पास करेंगे, अभी वैल्यू पास करेंगे, जब रिटर्न आए प्रिंट x, मुझे क्या मालूम है आपको क्या फंक्शन जरूरत है भास्कर,
छोटी प्रोग्राम बड़ी प्रोग्राम आपको वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होता, प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं होता। क्या क्या वेरिएबल्स एक्सेस करता, उसी अकॉर्डिंगली यू शुड फॉलो your parameter passing techniques. Your scoping will depend on programming language, not depends on your program. Programming language पहले डिसाइड करता वो। ऑलराइट, चलो पढ़ लो यार पहले थियरी। फंक, यहां पर x है, y है, z है। गाइस दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू है ना, तो 3 पास होंगे सीधा एंड 10 पास होंगे, है ना, वैल्यूज पास होंगे यहां पर, तो एड्रेस पास नहीं होगा। तो व्हेन यू डू ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ हो रहा है अभी, y इज इक्वल y प्लस 4, 10 14 बनेगा एंड z इज इक्वल x प्लस y प्लस z, x मतलब 3, y 14, z 10, सो 17 प्लस 10 27 z में होगा। जब फिर वापस आते x y सेम रहेगा ना, आउटपुट इज जस्ट x मतलब 10, y मतलब 3। everybody, call by value will not affect the actual parameter of the calling function. Actual parameters of the calling functions will not be affected by the call by value technique, right? Yeah. So this is what today and you require to understand. If you have any doubts, you can catch me guys, and I want you to understand that is static scope. Static scope, it depends on your syntax. डायनेमिक स्कोप सिंटैक्स से कुछ नहीं होता, देख के कुछ नहीं बोल सकता ये वेरिएबल x किसका है, y किसका है, तो दैट डिपेंड्स ऑन कॉलिंग सीक्वेंस। कॉलिंग सीक्वेंस सिर्फ रन टाइम में बनता, एट रन टाइम। सिंटैक्स बिफोर रन टाइम, एट कंपाइल टाइम बोलो चलेगा, बिफोर रन टाइम, right? These are the main differences between static scope and dynamic scope. If you have any doubt, I'll be there at Unacademy. Please visit and look at that. The most of the sessions I take freely guys, except this 11 AM session. If you look at except 11 AM session, all sessions are free only. And Unacademy is going to help you a lot. Even though you wanted to learn freely, the most of the content is visible. Those people who are not able to bear the subscription, we are always there. But when you want to crack the GATE exam, when you want to have a systematic preparation, the only one which will help you plus subscription. That is what we are always help you. We are trying to help you, right? Whoever want to learn something, then we are always there. And when you want to learn everything systematic, we have plus and iconic subscription that will guarantee your GATE rank. So आपको लाइव क्लासेस से ही बेनिफिट होता। So we are coming to YouTube to give you the most of the content which may or may not be available on other channels, but we are always trying to guide you, trying to help you. Those people who are following, please keep on liking our session, and those people who want to prepare systematically, we always recommend to come to the plus and or iconic, and we will help you, we will guide you, we will support you to crack the GATE exam. So this is what I'm talking about. Follow me to discuss with me, to understand the classes or to learn something from us, and also follow our faculty who are teaching here. We have very good faculty on this channel, and thank you so much for attending today's session. Yeah, and do not forget to like this session. Please do that, and also share and subscribe. Thank you so much, and this is my referral code. Whenever you want to take the subscription, use the code DEVALIVE. DEVALIVE. Deva is my name, and live because you are going to attend the live classes. So DEVALIVE. So this code is not just for my classes. You can go to any educator from any branch. You can use this code to learn any course from any educator. Thank you so much, and let's visit Unacademy and try to learn free from the free classes. If you are more interested, then you come to the plus or